गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। It's been a long time since I did a show alone with everyone, and I thought before I start, let me put out what's coming ahead. मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ आगे गना शॉट में क्या होने वाला है, राइट? क्योंकि मैंने अपना मोटे मोटे तौर पर गनर शॉट किस तरीके से चलेगा और क्या क्या आपको हम बताएंगे वो आपको अभी बता दूंगा। सबसे पहले ये जो ऑल ऑफ अस नो पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग। व्हाट इज दैट समथिंग वी डोंट नो, वेदर इट विल डिसइंटीग्रेट, वेदर इट विल कंटिन्यू लाइक दिस, वेदर देयर विल बी अ कू और समवन, व्हाट विल हैपन हमें पता नहीं। तो पर जो पाकिस्तान के अंदर जो गतिविधियां हो रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट। बिकॉज ऑफ दिस वी थॉट इन गाना शॉट I we will do a series on Pakistan, the future of Pakistan. In this, we are going to see what are the rifts in the Pakistan army and where is it going. The second one will be the return of the Khan, because it appears that Imran Khan is going to come back, right? And what will Pakistan be when Imran Khan comes back? Then there is a constant story which comes from within that the strategic importance of Pakistan is going down. अगर वो कम हो रहा है तो उसका क्या असर पड़ेगा पूरा दुनिया में? रेडिकलाइजेशन, उग्रवादी, राइट, ये सब पाकिस्तान मशहूर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सीपीईसी का क्या फॉल आउट है अभी, और उसके साथ साथ चीन का इनका रिश्ता के बारे में क्या होगा। उसके अलावा उनका इकोनॉमिक, वाटर और फूड इनसिक्योरिटी जो उनके सर पे मंडरा रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक सीरीज चलाएंगे सब विद द बेस्ट पीपल आई हैव, एटलीस्ट इंडिया हैज। They'll assess what is coming ahead. The first one we're going to do is Pakistan on the edge. Is there a rift or a mutiny? We're going to do it day after tomorrow. I'm going to do it with General Gautam Murthy, who's the head of CASA Dialogues. Then we're going to do on 10th April, that is Monday, I'm going to do estimate or a crystal gazing as to what will be the future of Pakistan with Imran Khan if he comes back, and he is most likely to come back. That I'll do with General Satish Dua, my good old friend. And in between, I'm going to do something about information operations, something new. We're going to do this on Sunday, 9th April. I'm going to do it with Colonel Dinny, who has got good knowledge and good idea about information operations. So we're going to discuss various aspects of information operations. Right, but that is what's going to come ahead. Today we'll get back to a peek into everyday China, right? And even in this peek into everyday China, I'm going to get shortly General Narsimhan. He's going to outline to us what's the China challenge. And he's been, DA in China. He's been in the China study group. He's commanded a corps on the China border. So, and he's been my good old friend. So he's also going to come on later. But today we'll do this. आज हम चाइना का जो पैंडेमिक, यूक्रेन वॉर और उसके तहत चाइना का कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो घट रहा है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और उसके बारे में बताऊंगा कि ये जो हवा फैला जा रहा है कि चाइना एक सुपर पावर बन जाएगा, चाइना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका क्या असलियत है और चाइना का क्या घाटा हो रहा है और क्या घाटा हो गया है और आगे जाके क्या होगा, राइट? सबसे पहले ये दिस आई रोट एन आर्टिकल, दिस एंटायर जो आज मैं बात करूंगा आपसे, दिस इज बेस्ड ऑन एन आर्टिकल। ये आर्टिकल मैंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस में लिखा और ये पूरा एनालिसिस है, एनालिसिस के तहत मैंने लिखा था
और इसी को मैं आप लोगों को आज आराम से समझाऊंगा कि क्यों मैं सोचता हूं कि चाइना का जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है वो घट रहा है, राइट। सबसे पहले बात यह है कि जो इन द प्री पैंडेमिक पीरियड बिफोर द वायरस केम, नो, चाइना's comprehensive national power was increasing rapidly. ये सोचा जा रहा था कि ये यूएसए को धकेल देगा और ये अव्वल दर्जे का और अव्वल नंबर पे आ जाएगा, और it was considered strong enough to be established a Sino-centric world order, कि दुनिया चीन के रिवाज और रीत रिवाज के साथ ही चलेगा और उनका हुक्म होगा और उनका बोलबाला होगा, पर ये हो नहीं रहा, ना होगा, राइट। सबसे पहले देखेंगे ये कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्या होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द चाइनीज मेंटालिटी इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। वो बार बार ये बोलते रहेंगे कि मैं नंबर वन हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे ताकतवर हूं। दे वांट टू ब्रैग, दे हैव टू बी नंबर वन इन एवरीथिंग। They are fixated on the GDP, right? GDP बढ़ना चाहिए, इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर बढ़ना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर क्या होता है? ये दिस इज अ टर्म विच वाज कॉइन्ड बाय द चाइनीज। इन्होंने बनाया कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। इससे पहले कोई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर के नाम के नहीं था, नाम निशान भी नहीं था 10-15 साल पहले, पर ये नया नया इन्होंने शुरू किया ये टर्मिनोलॉजी। इसमें क्या है? इसके मुताबिक मिलिट्री पावर, कॉम्प्रिहेंसिव वो पावर है जो मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, फाइनेंशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मैरिकेंटाइल पावर, ट्रेडिंग पावर, ये पावर वो पावर, कोई भी पावर ले लो, उसको मेल मिलाप कर लो, जोड़ दो, उसको एक नंबर दे दो और उसको एक वेटेज दे दो और उसको स्टैटिस्टिकली मैनिपुलेट करो। इसमें उनका कल्चर भी होता है, उनका रीत रिवाज भी होता है, उनका पढ़ाई भी होता है, सब कुछ होता है। और the way this national concept, this comprehensive national power is worked out, no one knows. But the Chinese keep calculating this and they keep putting it out. The best part is in this, the comprehensive national power of China is always better than the opponent. They don't tell you what is your comprehensive national power, they don't tell you what their comprehensive national power is, but they tell you China's comprehensive national power is better than the opponent's comprehensive national power. And they don't talk of comprehensive national power when they compare themselves with the USA. Now, they have made this Hawa, imaginary thing. My comprehensive national power is better than yours, so I can defeat you in war. They scare you. Oh, China has got better stamina, logistic stamina, stamina, war stamina. We have better weapon systems. We have a larger military. We have a bigger navy. Everything is bigger, larger, and they are the number one. And the sum total of that is comprehensive national power, whose metrics are not known. So it is largely an imaginary figure, right? So this is what one has to understand when people talk of comprehensive national power. Unfortunately, many of our experts and strategic analysts have fallen prey to this comprehensive national power. Many of them have gone to China and have understood whatever the Chinese have told them. It's influenced their brains, and then they come here and say, oh, China is a great nation because it has great comprehensive national power. Today, I will assess China based on the metrics of its comprehensive national power. जो भी वो बोलते हैं, what they think is comprehensive national power, based on that, let us assess them. पता होना चाहिए ना हमें सबको कि वो क्या है, right? So I will also be as obtuse as they are. इसमें मैं भी नंबर नहीं लगाऊंगा, मैं भी अपना दिमाग लगाऊंगा. Okay, सबसे पहले, like I said, first half of the pandemic, China was on the rise. वो ऊपर चल रहे थे, उठ रहे थे.
they were assertive in the South China Sea, Eastern Ladakh and Hong Kong. 2020 में वो LAC के ऊपर आक्रमण किया था, चाइना हांगकांग का हड़प लिया, सब कुछ हो गया। वुल्फ फॉर डिप्लोमेसी, व्हाट इज इट, मैक्सिमम पीक। कोई फ्रांस में बोल रहा है, कोई ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वहां ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा है, कोई कहीं से बोल रहा है, कोई अफ्रीका से बोल रहा है, और वो सब दे वर ऑल यू नो backed by China, by Xi Jinping. And then there was this mask, PPE, protection equipment, and vaccine diplomacy at its peak. उन दिनों में ये मास्क चाहिए तो go to China. You want PPE, go to China. Vaccines, China was the only one which was making vaccines, and they were saying, we will save the world. अगर आपको याद है, हम दुनिया को बचा लेंगे, हम सबको वैक्सीन दे देंगे, जो हमारे दोस्त हैं उनको पहले दे देंगे। वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रहा था, बाकी सब लड़खड़ा रहे थे, पर वो उनका बोलबाला चल रहा था। उन दिनों में सबको ये आइडिया था कि भाई चाइना नंबर 1 है, और बाकी हट गए, और यूएसए तो आउट। हमारे को तो दे वर मेकिंग फन ऑफ आवर्स, हमारे चिता जल रहे थे और वो उसको मजाक उड़ा रहे थे ये चीनी लोग। हम तो भूल नहीं सकते, शायद और कोई भूले, वो उनकी ये है। बट दिस इज इंपॉर्टेंट, फर्स्ट हाफ ऑफ द पैंडेमिक 2020-21 there was an authoritarian approach to stopping the spread of the virus. उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, ट्रेसिंग टेस्टिंग was strict, right, lot of quarantine facilities. It used to be told every day, oh we have built a quarantine facility, इतने बेड का क्वारंटाइन फैसिलिटी बना दिया, जो चींकता था उसको भी डाल दिया क्वारंटाइन फैसिलिटी में। हमने रोक लगा दिया, एंड हमने विजय पा लिया पैंडेमिक के ऊपर, जो और किसी ने नहीं पाया। That's what's their first half. Only China was this thing, the rest of the world was fools, and the Chinese system was the best system because they had the best comprehensive national power. Till 21, this was the story, and all of us believed it. हम भी सोच रहे थे कि यार ये तो अजीब देश है, या क्या ताकतवर देश है, पर उसके बाद इनका बांडा फोड़ गया। राइट? क्या हुआ सेकंड हाफ ऑफ पैंडेमिक में? इनका डाउनफॉल तब खत्म शुरू हुआ जब इनका वैक्सीन फेल हो गए, इनका वैक्सीन पानी के बराबर हो गए। इनका वैक्सीन जो है, ये जो कोरोना का रोक नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने एकदम आइसोलेशन कर लिया। आइसोलेशन में चाइना ने सेल्फ आइसोलेट कर दिया। जब चाइना ने सेल्फ आइसोलेट कर दिया और क्वारंटाइन बड़ी मात्रा में कर लिया और आइसोलेशन कर दिया और मास्क ये वो सब उन्होंने शुरू कर दिया, लोग उनको अंदर आने नहीं देते थे, बाहर जाने नहीं देते थे, इनका पूरा सप्लाई चेन दुनिया का टूट गया। जब सप्लाई चेन टूट गया तो लोग बोलते भाई हम चाइना के ऊपर क्यों निर्भर करें, हम डीकपलिंग करेंगे, हम चाइना में अगर जो कारोबार है वो उसके बराबर कारोबार और कहीं लगाएंगे। और इसीलिए तो एप्पल ने अभी शुरू कर दिया। ये सबको पता था कि 4-5 साल लगेगा ये डीकपलिंग में, पर सबने शुरू कर दिया ये। राइट? डीकपलिंग शुरू हो गया। डीकपलिंग से उनका अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ रहा है, इसीलिए उनका जीडीपी डाउन हो रहा है। आप याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया कि जब से since Xi Jinping has taken over, the GDP of China, which was going at 8 to 9% in 2010-12, is down to 1 to 2% now. बोल रहे हैं, they're saying it will go up to 5%, but I don't know whether it will happen. Okay, so that started. Then there's a very important thing. Many people don't understand this, but this is why Jack Ma was thrown out. Jack Ma was going global. He was putting an IPO in the world of Ant Group. Uska Ant Group is his group, Alibaba Group. Now, what had happened was, एक हफ्ता पहले, before the IPO was to go public, China pulled the shutters out. They said no, और जैक मा को अरेस्ट कर दिया
और एड्रेस के बराबर उसको कहीं भेज दिया, वो आजकल बच्चों को पढ़ा रहा है, स्कूल वाले टीचर्स को पढ़ा रहा है और सब कुछ XYZ, उसको आउट कर दिया. Why did they do it? What people don't realize is Alibaba started something like Alipay. What is Alipay? It's like Google Pay या फोन पे या Paytm, सब कुछ. But the danger which Xi Jinping felt कि Alipay would circumvent the UN and the control over the UN and the control over the financial system of communist China. One. Second, Alipay will go international. If it goes international, they can completely bypass UN. If any big firm completely bypasses the UN, it is out of control of China. If it is out of control of China, it is a threat to the Communist Party of China. And Communist Party of China believes in state control. उसने जट से जी जिनपिंग ने पकड़ लिया और अलीबाबा को डाउन कर दिया. उसके साथ साथ there were 2-3 other things which happened. The real estate was in a bubble. Real estate के जितने टाइकून थे वो काफी कारोबार चला रहे थे. उन्होंने काफी पैसा लिया था सबसे. They were in extreme loans और they were taking lot of advances from customers. आप और मेरे जैसे से पैसा ले रहे थे, फ्लैट नहीं दे रहे थे. This bubble was also going on. Xi Jinping knew कि अगर ये बबल टूट गया तो चाइना टूट जाएगा, तो उसने रियल एस्टेट के ऊपर रोक लगा दिया. रियल एस्टेट और बिग टेक मिला के चाइना का 40% का जीडीपी है. ये दोनों डाउन हो गए ओवरनाइट और आज तक वो उबर के बाहर नहीं आए. ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया, राइट, इसके बारे में इन डिटेल विस्तार में मैंने बताया क्यों डाउन है. कोई आज फ्लैट भी नहीं खरीद रहा है, XYZ सब कुछ, राइट. उसके साथ साथ एजुकेशनल टेक सेक्टर को भी डाउन कर दिया. एक्सपोर्ट्स डाउन होने लगे, अर्थव्यवस्था डाउन. इसके साथ साथ कॉमन प्रॉस्पेरिटी और करप्शन. कॉमन प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? अमीरों से लो पैसा और गरीबों को बांट दो, पर वो हुआ नहीं. उन्होंने क्या किया सब किसी को नहीं पता, क्योंकि आजकल वो कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात ही नहीं कर रहा है. गोल जो 2 साल 3 साल जी जिनपिंग चिल्ला के बोल रहा था कॉमन प्रॉस्पेरिटी, आजकल पिछले 3 महीने से उसका नाम और निशान नहीं है. करप्शन के चार्ज में सबको आउट कर दिया. उसके जितने ओपोनेंट्स थे, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, उन सबको अंदर कर दिया. उसके बाद वाइड स्प्रेड लॉकडाउन हुए शंघाई में, उरुमकी में, सबको पता है. प्रोटेस्ट हुए, राइट. ये सब उसका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को घटा रहा है धीरे धीरे पिछले 1.5 साल से घट रहा है. अब इसके दौरान एक इंपॉर्टेंट चीज आया. वो क्या है? वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. चाइना का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है. तो इसके दौरान क्या हुआ? अर्थव्यवस्था डाउन, हेल्थ डाउन, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन, राइट. और इसके साथ साथ ये जो आबादी का डेमोग्राफिक फैक्टर जो 10 साल बाद होना था अभी हो गया. क्लाइमेट चेंज का असर के ऊपर मैंने एक अच्छा वीडियो निकाला, पिछले मैंने निकाला, वो भी शुरू हो गया क्योंकि अकाल पड़ा और बाढ़ आए 2 साल. अगर आप ये पूरा देखोगे तो सेकेंड हाफ ऑफ द पेंडेमिक में ये सब डाउन होता शुरू हो गया. और चाइना का जीडीपी तो आजकल भी डाउन है, उनका एक्सपोर्ट अभी भी डाउन है. मैं आपको बाद में बताऊंगा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के 2-4 आपके रिपोर्ट्स लेटेस्ट दिखा के. तो ये जो चीज है आम लोग सोचते नहीं है और इसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो कभी बहुत लोग ये सोचते हैं कि चाइना के अलावा और कुछ है ही नहीं. मैं भी मानता हूं चाइना एक बड़ा देश है, उनका बड़ा अर्थव्यवस्था है, बड़ा ताकतवर देश है, इसमें कोई डाउट नहीं है.
और इतना भी ताकत नहीं है कि वो हमारा सर पे बैठ के हम कुचल जाएंगे हमें, राइट? यही मैं बताना चाहता हूं सबको। ओके, मेरे हिसाब से विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट एक बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट हिस्सा है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में। अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप वीडियो नहीं देखोगे या सब कुछ। ये जो पैंडेमिक के दौरान जिस तरीके से चाइना के गतिविधियां थी और उनका चाल चलन था, उससे पूरा दुनिया का काफी लोग चाइना के ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया। ट्रस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय चाइना, whether they liked it or not. Their wolf warrior behavior, their general behavior, and खास करके in India, we just don't trust China. I met a Taiwanese, right, a Taiwanese professor. He says it takes an idiot to trust a communist Chinese. Sorry, a Chinese communist. Right? And the behavior of China actually kick-started the Quad. The Quad was not to be formed. If I go back in history, क्वाड के ऊपर मैं किसी दिन और मैं विस्तार में आप लोगों को बताऊंगा, बट अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो 2004 के सुनामी के बाद ये पता चला कि इंडिया के बिना इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में काम नहीं चलेगा। खास करके इंडियन नेवी का जिसने जो सब लोगों को बचाया था और सब कुछ किया था, यूएसए और जापान को पता चला कि भाई इंडियन नेवी एक उभरता हुआ और ताकतवर फोर्स है इस इलाके में, उसके बिना हमारा कुछ नहीं चलेगा, चाहे डिजास्टर में हो या सुनामी में हो या इन वॉर टू कंटेन चाइना। और उस वक्त आश्चर्य की बात है, ये जो लीडर है ना चाइना, उसने एक नाव भी बाहर नहीं भेजा, वो चुप अंदर बैठ गया, किसी को मदद नहीं किया। राइट, देन व्हाट हैपेंड? The idea of Quad started in 2004, but China had major objections. The Australian Prime Minister at that point of time had major objections because he was a left-leaning individual, and Quad finished off. Quad got revived during the pandemic. China के गतिविधियां, उसका assertiveness, उसका aggression, right, उसको तीव्रता के जरिए क्वाड दोबारा बन गया। और क्वाड का पहले पहले मेरे को अभी भी याद है, एक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ था ऑन द साइडलाइंस ऑफ अनदर मीटिंग। धीरे धीरे हेड्स ऑफ स्टेट मीट हो गए, एक्सरसाइज बढ़ गए, और अभी क्या है, क्वाड एक ताकतवर ग्रुपिंग बन के बाहर आया। क्यों? चाइना के अंदर, चाइना के ऊपर किसी को भरोसा उठ गया सबका। और ये चार ताकतवर देश हैं, जापान, इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। टॉप 5 इकोनॉमी में 3 इकोनॉमी अभी साथ साथ हैं, जापान, इंडिया और यूएसए अगेंस्ट एक चाइना। तो किसका कॉम्प्रिहेंसिव पावर, नेशनल पावर ज्यादा है? आप सोचिए। राइट, यूक्रेन वॉर में, राइट, ये पता चला कि सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री में जाऊंगा। ये जो पिछले साल बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था, विंटर ओलंपिक्स, उस वक्त रशिया और यानी कि जी जिनपिंग और पुतिन के बीच में नो लिमिट्स फ्रेंडशिप हुआ था, राइट। और उसमें सबको ये शक है कि पुतिन और जी जिनपिंग के बीच में ये समझौता हो गया कि हम लड़ाई जाएंगे, और जी जिनपिंग ने हाँ भर दिया उसके लिए। शक, भरोसा वो उठ गया था। इसके तहत यूक्रेन के युद्ध में जो भी गतिविधियां हुई, whatever actions and decisions had to be taken by the West and USA and most of us, big nations, the international decisions were taken without consulting China. China was kept aside.
No one bothered about China for the first 6 months of the Ukrainian war. And China did not know what was happening. Now, if you have tremendous comprehensive national power, and if you are a great power, you must be able to shape the world. But unfortunately or fortunately, during the Ukraine war, from the start till about recently, no one bothered about China. China was actually ignored. All warlike decisions or related to war were taken without China. Right? एक और, China was kept on the sidelines and warned of repercussions of rendering direct assistance or direct warlike assistance to Russia. China has even now been told, you give anything like ammunition or direct warlike assistance to Russia, we'll put sanctions on you. And look at it, China has not crossed that line. They've had to simply lump it for so far. So you have to see, where is this great story of comprehensive national power going on? Okay. Like I said, if I will put it this way, अगर आप इंडिया देखो, लोग इंडिया के पास आ रहे थे कि भाई किसी ना किसी तरीके से यूक्रेन और रशिया से समझौता कराई कीजिए. इफ यू रिमेम्बर, नरेंद्र मोदी साहब ने पुतिन के साथ भी बात किया था और जेलेंस्की साहब से भी बात किया था, और ये बात उन्होंने जिक्र किया न्यूयॉर्क ने वॉशिंगटन में, जब ये बाइडेन साहब को जाके मिल रहे थे. ऐसे कोई चाइना के बारे में किसी ने सुना? उनको तो किसी ने बात भी नहीं करने दिया. अभी आ रहा है उसको चोंच खोल के. राइट. वन मोर पॉइंट ऑफ very important thing about comprehensive national power. जब नैन्सी पेलोसी went to Taiwan in August, right? What could China do? इससे पहले कि before Nancy Pelosi could land in Taiwan, lot of media coverage was there कि भाई नैन्सी पेलोसी का जो हवाई जहाज नीचे उतरते पहले उसको उड़ा दो, हमारे लड़ाकू विमान भेजो और उसको उड़ा दो, उसको लैंड नहीं करने देना, अगर लैंड हो गया तो उसको बाहर नहीं जाने देना. आखिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. चाइना कुछ नहीं कर पाया. उससे पहले बोल रहे थे कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर हमारा इतना है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. क्या हुआ? कुछ नहीं. तो बात यह है कि ये जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है वो एक कल्पना है. इट्स इमेजिनेटिव. हकीकत क्या है? हकीकत वो है जो आप लड़ाई के मैदान में उतार सकते हो, या इकोनॉमी में उतार सकते हो, या डिप्लोमेसी में उतार सकते हो. अगर आप देखोगे इस दौरान तीनों चीज चाइना का फेल हो गया. चाइना क्या कर पाया अगेंस्ट ताइवान? कुछ नहीं. इनफैक्ट चाइना हैज रिमेन्ड reticent or hesitant to commit PLA in out of areas operations. आप देखिए, क्या चाइना ने एक ऑपरेशन भी किया है दूर इलाके में? आप इंडिया का देखिए, पिछले 20-30 साल का हिस्ट्री में हम गए श्रीलंका में एज पीस कीपिंग फोर्स, मालदीव में गए इंटरवेंशन करने, सुनामी में हमने आउट ऑफ एरिया किया, इंडोनेशिया तक हमने जाके लोगों को बचाया. चाइना ने क्या किया? यहां तक वो नैन्सी पेलोसी जब आई, वो ताइवान 200 किलोमीटर दूर है. आफ्टर ऑल इट्स ओनली आइलैंड 200 किलोमीटर अवे. दीज पीपल कुडंट गो देयर आल्सो. तो फिर क्या मिलिट्री है ये गलवान में आए, पिटाई खा के चले गए. यहां तक आज तक वो झूठ बोल रहे हैं कि हमारा 4 ही लोग गए, जब सबको पता है बहुत लोग उनका मौत हो गया. यांगसी में दोबारा आए और पिट के वापस गए. तो फिर कौन सी फौज है ये जो उसको ताकत है? नंबर से थोड़ी ना ताकत बनता है. ताकत तब
है जब आप एक्शन में लेके आओगे सब। आज तक चाइनाज पीएलए, कंप्लीट पीएलए मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है और अनटेस्टेड है। इट्स अनटेस्टेड इन बैटल। फ्रॉम 79 टू नाउ पीएलए रिमेन्स अनटेस्टेड इन बैटल. As long as PLA remains untested in battle, its military power is not proven. When I say military power is not proven, its effective military power in operations has not been proven. If effective military power has not been proven during operations, then there's a huge question mark on their comprehensive national power. Because a major pillar of comprehensive national power is military power, and which is a big question mark. Right? And China has remained hesitant and reticent to go out of its own area to establish its mark in the world. अगर एक सुपर पावर बनना है, आप अपने फौज को बाहर भेजना पड़ेगा. आपके फौज दूर दराज इलाके में जाके लड़ना पड़ेगा और आपको हक जीतना पड़ेगा. अगर आप देखोगे, जब रशिया, यूएसएसआर वाज अ सुपर पावर, इट फॉट इन अफ्रीका with African countries in their wars. Even now, it is helping Syria out. Right? USA's commitment is so much. What has China done? China has said so much about Afghanistan, that we will do everything for Afghanistan. We will go to Afghanistan X, Y, Z. They have not sent a single soldier outside China. Till such time, the PLA steps out of China, their comprehensive national power is a question mark. सब बोल रहे हैं कि इनके पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सब कुछ है. आज तक उनको वो थट पकड़ के बैठे हैं. They have got the coast, they have not come out of the coast. Today I saw a report which says one aircraft carrier is trying to get out of, come into the South China Sea. Or aircraft carriers go up to Port Blair and come back every second day. Well, that's a different story. Okay, what has China further done? Right? Now, China has become a systemic threat to most people. Right? China जिस तरीके से इसका व्यवहार है, सब कुछ, इसकी वजह से EU, USA, जापान, ये सब ने बोल दिया कि भाई आप हमारे लिए खतरा है. सिस्टमिक खतरा. आप हमारा बहुत चीजों के ऊपर खतरा डालते हो. हमारा इकोनॉमी के ऊपर, हमारा टेक्नोलॉजी चुरा लेते हो, सब कुछ. सो यू आर अ सिस्टमिक थ्रेट. ओके, यूएसए ने चिप्स एक्ट जारी किया है और इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको. ये चिप्स एक्ट में क्या हो, मोटा मोटा तौर पर, नॉट इन डिटेल, बारीकी से नहीं, मोटे मोटे तौर पर 3 पहलू हैं ये चिप्स एक्ट के. क्या है? पहले पहलू है कि ये जो आपको आधुनिक एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन चीजों के लिए यू नीड फाइन वेफर थिन चिप्स, सेमीकंडक्टर्स. नाउ दिस, ये जो चिप है, जो मॉडर्न चिप्स हैं, इसके लिए 3 चीज चाहिए. आपको एक डिजाइन चाहिए, आपको लिथोग्राफी चाहिए उसको चापने के लिए, और प्रोडक्शन का काबिलियत चाहिए. 3 चीज. डिजाइन जो है यूएसए में होता है और किसी के पास नहीं होता. राइट? उनका इन्वेंशन, सब कुछ, इनोवेशन, डिजाइन उधर होता है. इसको जो चापने का क्षमता है वो डेनमार्क में होता है. एएसएमएल नामक एक जगह है, वो कंपनी है, वो बनाता है, और उसने चाइना को मना कर दिया. यूएसए तो मना ही कर रहा है. और प्रोडक्शन, इसका बनाना, वो ताइवान के पास है, टीएमएससी के पास. तो अगर ये 3 चीज चाइना के पास नहीं है तो ये चिप नहीं बना सकता. अगर चिप नहीं बना सकता, आधुनिक सेमीकंडक्टर वगैरह नहीं बना सकता, इसका शक्ति लिमिटेड है. मजे की बात ये है
कि जब सबको पता चला कि द चिप्स एक्ट इज गोइंग टू कम पिछले साल, और ये सेमीकंडक्टर के बारे में शुरू हो गया कि यूएसए स्टार्टेड यू नो saying that we'll not give you chip technology. China invested a lot of money to make chips indigenously. They started a lot of programs. जब इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था, ये सारे स्कैम्स निकले. They were all scams. Scamsters. Everyone with some dubious degrees came and said, we'll make chips for you and make you self-sufficient in chips. That's gone. Now they're saying, oh, we're going to do this, we're going to do that. Let's see. So they are technologically weak. I mean, when I say technologically weak, relatively. So one other ingredient of comprehensive national power is weak. Technology. They don't have seeds. Right? So they have, and they want technology from Russia. They're not self-sufficient in technology. So their economy is down, their military is down, their technology is down. They don't have trust. What kind of comprehensive national power are we talking? Let's come to the present. आप बोल सकते हो भाई वो तो पैंडेमिक का दौरान था, वो तो सब खत्म हो गया, अभी शुरू हो जाएगा. अभी इनका इकोनॉमी अभी भी इट्स sluggish, ठीक नहीं चल रहा है. They are wooing private investment and private players to come in. मांग रहे हैं कि भाई आ जाओ, हमारे साथ काम करो, हम सब कुछ देंगे. पर साथ साथ एक और अजीब चीज है. एक न्यूज आया है कि, न्यूज नहीं, इट्स अ फैक्ट. Communist Party of China is launching a party-wide education campaign on Xi Jinping thought. Xi Jinping thought is all about common prosperity, state control, the state being, the individual being subservient to the state, discipline, anti-corruption, all this. Now, all this is at odds. Private investment they want, but they'll not give him the full leeway. They're still telling you, come do private investment here, we will allow you, and we will see how to help you out. They are not going to give private sector the freedom which earlier it had in China. If that doesn't happen, the comprehensive national power will not go anywhere. That's the point. Many people don't understand. Okay, I'll give you some examples. Now, USA has come back into Philippines and is establishing 4 bases. Now, that is sitting just next to, China. अब देखिए, एक युएन वैंग 3 हम्बनटोटा में आया था और पूरा इंडिया में चर्चा हो गया. वो कैसे आके बैठ सकते हैं यहाँ? और integrity and sovereignty is at stake. They will do spying, they will do monitoring of our missile tests, everything. यहाँ 4 base at the same distance, up to from 400 to 500 kilometers दूर, US bases will be there next to China. It gives a reach for USA into mainland China. Can you think? That's their comprehensive national power and they can't stop it. Now, Xi Jinping went to Malaysia. The Malaysian Prime Minister, Malaysian Prime Minister went to Xi Jinping, met, a lot of talk, a lot of deals, a lot of thing. But Malaysia has not committed itself because they have doubts about South China Sea. क्योंकि चाइना जो है उसे उनको हड़पना चाहता है. और ये मलेशिया ही नहीं, इंडोनेशिया मान लो, वियतनाम मान लो, फिलीपींस तो अभी ओपनली अगेंस्ट है. इसके सारे इर्द गिर्द के जितने देश हैं, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया और सिंगापुर भी कुछ हद तक, they've all gone against China and they have increased their defense expenditure and capabilities. And that's going to contain China.
तो देयर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है ना, वो बांध के रखेंगे। और इस साइड हम इंडिया में भी हमारा अपना बढ़ा रहे हैं, तो चाइना का जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है सब मिला के दबा रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों दबा रहे हैं? वो दब सकता है। क्यों दब सकता है? क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इज वीक। राइट। इनका अर्थव्यवस्था का हिसाब किताब देखिए, ये आजकल का न्यूज़ है कि देर आर, इनका जो करप्शन के चार्जेस में इनका बैंकिंग सेक्टर के ऊपर देर समथिंग गोइंग ऑन। ये क्या है अभी तक पता नहीं, ये निकल आएगा एक हफ्ता 10 दिन के बाद। एक बंदे को तो उन्होंने अंदर कर दिया, राइट, एक उससे पहले भी एक बंदे को अंदर कर दिया। तो इनका बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में प्रॉब्लम है, इनका बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है, रियल एस्टेट में प्रॉब्लम है, कर्ज में डूबे हुए हैं। उसके बारे में बात करेंगे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एडिटोरियल है, उसमें बताया गया है चाइनीज सिटीज आर बरीड इन डेट बट दे कीप शॉवलिंग इट ऑन। इसका मैं बताऊंगा क्या है। कर्ज में डूबा हुआ है, रियल एस्टेट कर्ज में डूबा हुआ है। सो द एंटायर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ चाइना इज एट रिस्क। इट माइट नॉट कोलैप्स बिकॉज, क्योंकि उनके पास कम्युनिस्ट पार्टी है, बैंक भी उनके हैं, लैंड भी उनका है, सब कुछ उनका है, उनका बोलबाला है, तो कोई कोलैप्स नहीं होगा। इधर से पैसा उठा के उधर डाल देंगे, पर दे आर एट रिस्क। नो, चाइना का जो मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीन इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्ट डाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैक्सिमम हो गया है। तो लोग बोलते हैं कि भाई ये कंजम्पशन शुरू करो। जब तक हम कंज्यूम नहीं करेंगे, अपना इकोनॉमी, चाइना का इकोनॉमी विल नॉट रिवाइव। बट चाइनीज सिटीज एंड देयर प्रोविंसेस आर टेकिंग मोर डेट फॉर मोर इंफ्रास्ट्रक्चर which they don't need. That is the sum of this report. Actually, I was surprised. If they're going to continue with debt, if they're going to continue with infrastructure, and exports are not picked up, so where is their economy going? And there is no consumerism has not started in, because they're unsure. Chinese are still saving. I don't know whether I have, yeah, that's not that. There's a report which says the saving conscious Chinese are not spending. So where is their economy going? If their economy is not going, where is their comprehensive national power? So we have seen economy, we've seen finance, we've seen trust, we've seen health. All these aspects of comprehensive national power are down. You put any angle to it, you put any metric on it, it will be down. Now let's take diplomacy. Very interesting. This is last week's. See, when China mediated between Iran and Saudis, जब इनके बीच में समझौता हुआ, तो चाइना तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गया कि हमने ये इनका को दोस्ती करा दिया सब कुछ। और ये जी जिनपिंग साहब गए रशिया जाने से पहले इनका मीडिया में हर रोज, आप उस 10 दिन पहले, जी जिनपिंग के 10 दिन जाने के 10 दिन पहले और जाने तक, टिल दैट 10 days, if you see Chinese media, it only says high speculation that Xi Jinping will go and mediate between Ukraine and Russia and will bring an end to the war. And if he brings the end to the war, he is a great statesman. शांति दूत बन गया, यमदूत जी शांति दूत बन गए कि ये समझौता लेके आएगा। और ये उनका मीडिया ने सब, हर कोई भी आप उसका ले लो और ये सब होगा, राइट। पर हुआ क्या? और जब ये गए थे, जब when Xi Jinping was in Russia, it was said, why, it's a new chapter of Sino-Russian friendship. And they said, the Chinese media very clearly said, it will be a 2 versus 1 against USA. Let me explain this a little further because I have to go back in history. When the Cold War was on in the last century, जब पिछले सदी में ये Cold War था, and
USA was trying to break Soviet Union. So USA went to China. Nixon went to Mao. उसे बातचीत हुआ, उसे समझौता हुआ और वो चाइना को अपने साइड में ले लिया और he made it a 2 versus 1 against Russia or USSR then. And that is how USSR could be broken. USSR broke due to a lot of external factors and internal factors. And the 2 versus 1 theory was there. Today, Russia and China want to be 2 versus 1 against USA. और खास करके चाइना का मीडिया में फैल रहा है. बट द फनी पार्ट, और ये चाइना और रशिया के बीच में दे ट्रांजैक्शनल इक्वेशन हो सकता है, गहरी दोस्ती नहीं हो सकती. क्यों? जब जी जिनपिंग वाज इन रशिया, पुतिन ने उसको बोला कि भाई हम परमाणु हथियार हमारे सरहद के बाहर डिप्लॉय नहीं करेंगे. जैसे जी जिनपिंग वापस आए, पुतिन ने बेलारूस में जाके परमाणु हथियार डिप्लॉय कर दिया. तो ये क्या दोस्ती है? तो ये डिप्लोमेसी भी फेल हो गया और जी जिनपिंग होके आए, शांति का कोई बात ही नहीं है. There's no mediation. The Ukraine war is going on and China has come back. ना 2 होगा ना 1 होगा. So the comprehensive national power is not as much as we imagined. And comprehensive national power is a metric. एक कल्पना है, यही मेरा right. एक और बात है, 1 साल से ये लड़ाई चल रहा है ना. रशिया ने ये जाहिर कर दिया कि उनके पास ये क्षमता है कि ये लड़ाई जारी रख सकते हैं 1 साल तक. उनके पास टेक्निकल स्टैमिना है, एनर्जी है, रिसोर्सेस है और खाने का सामग्री है, फूड सिक्योरिटी है और फूड एक्सपोर्टर है. दे कैन सस्टेन वॉर. क्या चाइना कर सकता है? चाइना के पास, चाइना इज फूड इनसिक्योर, इट इज एनर्जी इनसिक्योर, इट इज रिसोर्स इनसिक्योर. उसका एनर्जी का लाइन्स हम मलाका स्ट्रेट में काट सकते हैं. सब जो कुछ चीन के अंदर जाना है, 60 to 80% जो है वो मलाका स्ट्रेट के थ्रू जा सकता है, जो हम काट सकते हैं. इट इज वल्नरेबल. अगर ये वल्नरेबल है, क्या 1 साल 1.5 साल तक ये चला सकते हैं युद्ध? कल के दिन हमारे साथ भिड़ गए तो, अगर भिड़ गए तो हमारे साथ युद्ध भिड़ गया तो जापान अगर वहां कुछ कर दे तो इनका क्या हालत होगा? और यूएसए आके वहां बैठ गया, जैसे ने पहले बताया कि वो फिलीपींस में आके बैठ गए. अगर उधर लड़ाई होगा और हम इधर से पीछे से कुछ करेंगे तो इनका क्या हाल होगा? ये नहीं बोल रहा हूं कि होगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, पर इनका हाल क्या होगा इसके ऊपर विचार कीजिए. उससे पता चलेगा कि इनका कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का जो कहानी है क्या है, असलियत क्या है. एक्चुअली अगर आप देखा जाए, ये अनुमान कई लोग बता रहे हैं कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, आप कुछ भी बोल लो पर उससे लड़ाई नहीं जीत सकते हो. अब उससे खाना नहीं खिला सकते हो, उससे तेल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपके पास तेल ही नहीं है, तो आपके कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है? आपके पास कुछ पावर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. आपका मैन्युफैक्चरिंग पावर है, आपका कुछ टेक्नोलॉजी अच्छा है, आपका ट्रेड करने का तरीका अच्छा है, आपने सबको लपेट लिया बीआरए में, वो सब है. बट वो सब सीमित हो रहा है आजकल. आगे जाके जैसे आपका आबादी घटता जाएगा और ये क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता जाएगा, ये भी घटेगा. राइट. ये भी आजकल लोग सोच रहे हैं कि भाई इंडिया के पास खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर फूड सिक्योर, वी आर फूड सरप्लस, हम एक्सपोर्ट करते हैं.
वी आर एनर्जी डेफिशिएंट बट एनर्जी सिक्योर। क्यों? हमारा एनर्जी सिर्फ ज्यादातर ज्यादा ईरान गल्फ से आता है और या रशिया से आएगा। रशिया लेके हमारे पास लाके हमारे दरवाजे पे दे देता है। और गल्फ से लेकर 3 घंटे का रास्ता है आपका, आ जाएगा तेल इधर। पर गल्फ का तेल चीन जा सकता है अगर हम ना चाहते तो। अगर हम चाहें कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे तो हमारा जो काबिलियत है लड़ाई करने का उतना बुरा नहीं है जितना लोग बोलते थे। मैं ये आपको स्टॉप, आई हैव प्रूवन टू यू टुडे दैट China's comprehensive national power is suspect. Now, this is my last slide. Last year, when I said all this in some other form in Diff Talks or Jaipur Dialogues or on P Gurus, people didn't believe me. But ये तो एनालिसिस है, ये तो आप मेट्रिक डाल दो इसमें, आपको खुद पता चलेगा चाइना का क्या हालत है। And you want to see the logic? Read my article. Right? Yeah. That's all I've had to say. We have some time. I'll go through some questions. Rupa Rao, thanks a lot. You're a great lady. You keep following me and retweeting and all. So grateful to you. And Gaurang Kanvende, thanks a lot. It's my idea that it's not only my deep insights, I will give you insights from the best minds. It will be fact-based analysis and reality-based analysis. And that's what I'm going to start on Pakistan. And I'm going to do this more on many other subjects. Join us. Please subscribe. If you subscribe, please press that bell button. I need more people with thumbs up and all here so that more traffic comes and people start believing in India's strength. I have nothing to gain or lose out of talking to you. But India has. Right. Ritik Dochak says they were laughing at us during pandemic, making fun of fires. But the best way to take revenge on your enemy is to be more successful than your enemy. I completely agree with you, Ritik. And Pinky Santra, Jai Hind, Jai Hind. Abhishek. Thanks, General Saab, for informing us about China. Your videos are both informating and amusing. Yes, thank you. We need to have some entertainment also, right? Besides fact. So, assuming that 20 to 25% of the production moves out of China, will it not adversely impact their present competitive advantage over global supply chain in the long run? That's the problem they have. Viswanathan, you hit the nail on the head. They're going to have a lot of problems on this score. On that, I don't have doubts. 5 years back, not 5 years back, when the pandemic started in 2020 and business was starting, there was a banker in Qatar whom I know. We were discussing. He's an international banker based in Qatar. He manages the Qatari bank, their national bank. He was saying that if China loses anything above 15% in business and exports, it has problems. 25 to 30% is a huge amount. And I put a figure of, 5 years for this. Out of 5 years, 3 years have passed. Right? I won't say 3 years. What is it? We're in 23? Yeah, about 3 years have passed. There are 2 more years. Just watch. Just watch. And then, like Abhishek says, am I informative or amusing or wistful? You take a call. Because 3 years back, I said the Chinese will not come back to fight with us. They have not come back. Right? Same thing will happen. Whatever I'm saying, if it doesn't happen, we'll talk about it. Yeah, they were laughing at us during pandemic. Yeah, that we've gone through, Ritik. By this
I think comprehensive national power of India is increasing and not China. I agree with you completely. We need to have that confidence in this. That's why I said our comprehensive national power is we don't understand what we are, right? We don't understand what we are. Let me put it in a little different manner. How many Chinese are governors of US states? How many Chinese have become vice president of USA? How many Chinese have become presidents or prime ministers of other countries like Ireland, Britain, Singapore? Think Maldives. Our power is hidden. We don't understand our own power. All these Indians who become whatever they are in other countries have headed their countries. They are residents of that countries. They have no loyalty to India. I completely agree. But they understand India. Okay. And their behavior is conditioned by certain Indianness, whether you like it or not. That is why when Kamala Harris won and became the vice president of America, they were breaking coconuts in Chennai, temple. Why? So you have to think beyond the normal. Okay, Kotari, why do we continue to recognize Tibet as part of China when it continues to undermine us, rename places, make new claims every year? Why don't we respond in kind? I think we should do it, and I think sometime now we will start doing it in some form or the other. We have to recognize Tibet because that's a treaty we've done. We recognize Tibet and they recognize Sikkim as part of India. So you can't go back on a treaty, but you can do something else like what they did. Immediately after the treaty in 2003, they started calling Arunachal as South Tibet. So we can also call, apna areas across Kalapani, right, as where our pilgrimages go, right? Mansarovar Lake and all as part of India because it's Indian. I mean, we have to do something. Right? We can't keep sitting. That's my view. The government might have a different view, but there's my recommendation that unless you put this question and take this across, you'll have a problem. You can't keep saying, oh, they're claiming. Let's claim. Right. Then Tushar, sir, given India's dependence of imports from China, what in your opinion would be a future trade policy for India to systematically decrease supply chain reliance? Look, you have to do Atmanirbharta on a few things. One, lithium ion batteries. Second, API. If these two things you color and increase, your dependence on China will go down by 40%. बाकी ये जो mobile and all, it doesn't matter. Core things which affect your economy, you should be able to become Atmanirbhar. Do we have a plan to do that? We have some plan. Is it going as per that plan? I don't know. But I know it's not going to happen overnight. For the next 4-5 years, it will continue like that, like this. So what has happened over the past 15-20 years, you can't undo in the next 2-3 years. It'll take another 10 to 15 years. So we have to be patient. In this part of this patience, we should have the confidence that you're dealing with a country which is weakening, and you're dealing from position of strength. How do you convey it? This is the art of statecraft, which I'm trying to inculcate by my talking. Unless all of us speak in the same way, we'll go nowhere. That's the point. Right? Then butter chicken and naan says General China and Russia have both same deep battle doctrine. Has Russia used deep battle doctrine in this war? What are the chinks by the deep battle warfare exposed by this war, sir? China had it's one thing to have a doctrine, other thing to execute it. The Russian deep battle doctrine, which stems from the Second World War and down to the time of their operational maneuver groups, which they had, and they had tremendous capability when it was USSR against during the Cold War period.
All that has gone. The doctrines have remained. The ability to carry it out is gone. Right? Now, as far as China is concerned, I have read a lot of Chinese literature. And surprisingly, I have not seen maneuver as their doctrine. Maneuver is not their doctrine. Their thing is they talk of system destruction warfare, firepower, destruction, cyber attacks, XYZ, but not maneuver. So if you don't talk of maneuver, you don't think of maneuver, and the fundamentals of warfare are fire and move. If you don't do these two things, your doctrine is suspect. And what has the Russian war, Ukraine war proven? You can keep firing any amount. If you don't maneuver, you don't get victory. And I have not read Chinese uh, maneuver thinking. So if you don't know how to think, you are not acted, how will you be successful? Right? At least the Russians have thought. They've tried it. They tried that maneuver during Kiev and it failed. After that, they've not done it. Right? It's one thing to talk. The other thing is to do. Now, look at India's capability to maneuver. You outmaneuvered Pakistan during Bangladesh completely. You outmaneuvered them locally during Kargil. Fire and move. Okay? So, you've shown the ability to maneuver, you've shown the ability to fire, you've shown the ability to synchronize your fire and move. That's a very great ability we have demonstrated, and we talk of it. It's not a doctrine, we practice it. So have confidence in your army and the armed forces. Yeah, you are very seriously the very, very best. Thank you, Baharilal Mishra ji. Thank you. आप अपने दोस्तों को भी बोलिए यहाँ आके थोड़ा नंबर बढ़ाएं हमारा. चाइनीज का नंबर क्यों बढ़ा रहे हो, हमारा नंबर भी बढ़ाइए. Post Galwan, there was a massive anti-China push from state and its mouthpieces. Today, the Chinese well, this is something which everyone talks about, and we have to do something. And I've said, what is it we have to do? I hope the government does something. I'm sure they're doing something, right? Right. Shubham says recently army issued warning not to use China-made smartphones due to surveillance concerns. Still no ban by government to ban Chinese phones. They have done some. They have banned a few videos. Actually, what we have done is much more than what the rest of the world has done. Okay. So grant it to our government. Huawei बैन कर दिया, ZTE बैन कर दिया, Xiaomi और Vivo के ऊपर भी उन्होंने तकरीबन बंद ही कर दिया. उन्होंने अलग तरीके से बैन नहीं किया, पर उनको ऐसे चाबी लगाया कि वो कम हो गया. But there's a long way to go. And having said that, what is the balance? That's the point. Shubham, you have a valid point. We have to do more on this. Yeah, you are extremely informative. Anyone who says you aren't has lost. No, but look, information and knowledge is what base you make. If the base is made from a Chinese perspective, you will think like a Chinese. So my information to many people who have been schooled in the Chinese thought is sounds illogical. But I'm very clear because I have backed everything with my data and with Chinese sources, and whatever I have said has happened. Uh, well, there are people who do read what I give, and I know they keep coming back to me and saying, "So, what about this? What about that? What about this?" So I am very sanguine that they will listen to me. But then there's the world. You will have कोई सुनेगा आपका, कोई नहीं सुनेगा. ठीक है. Yeah, demographic and bomb in China has gone off long time back, and it's now aftershock. It's not aftershock. That shock is going to remain throughout. They're only going to go down. Yash says, "Thank you, Jai Hind, Yash." Right. What is your opinion on Peter Zihan's prediction on China and its demographic and industrial collapse?
I don't know. Peter Zahan goes takes it to an extreme, right? You have to understand that China is a huge country, 1 billion people. It can't collapse overnight. It will slowly degrade. Degradation of China is on the cards. Collapse of China will not happen, right? And this is Chinese history. अगर आप Chinese history देखोगे तो हर 2-3 साल 200-300 साल 100 साल से लेकर 300 साल तक इनके राज चलते थे और राज बदली हो जाता था। और इनका राज जो बदली हुए हैं वो खास करके अकाल और बाढ़ के वजह से बदली हुए हैं। इसीलिए मैंने बताया अगर ज्यादा अकाल आ गया, ज्यादा बाढ़ आ गया, कम्युनिस्ट भी जा सकते हैं। इनका बोलबाला भी 100 साल हो गया इनका इनका वैसे टाइम शुरू हो गया मेरे हिसाब से। Make a video how we can use Andaman. Yeah, I'll do that. Pradeep, I'll do. I'm only waiting for a good naval officer to join me. Look, I will not get anyone on my show whom I don't understand, right? I will only get people on my show who know, I know they know, and they're proven. So I'm hoping one of my postmates joins me, who retired very high. He's in a 3-star rank. When he comes, we'll talk about this. Thanks for your lecture. It has made me feel more secure in respect of China. Apian, don't worry. India is a strong country. Okay. Komal Sethi says, nice analysis. Komal, thanks a lot. Get some of guys on the show. Do a show on Chandigarh lobby. What is it? Who are they? And what good? Oh, I don't want to get involved with it. Right, छोड़ो. ये लॉबी शॉबी हमारे लिए नहीं है। हम सीधा साधा फौजी हैं, हम अपना काम करते हैं और सबको बताते हैं। एंड दैट्स अबाउट ऑल, राइट? Podcasts on the Indian Army used artillery in Kargil. I'm going to do a full show on artillery, how artillery is progress, because अगर आप याद है तो कुछ दिन पहले एक CAG रिपोर्ट आया था कि हमारा आर्टिलरी प्रोग्राम 20 साल पीछे हो गया और उसके बारे में काफी लोगों ने कुछ बोला। बट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट्स नॉट सो बैड। कुछ डिलेज हुए हैं, बट artillery is one of the most fastest modernizing artilleries in the world we have today. I'll explain this in a little detail. Let's finish this Pakistan series because the Pakistan condition is in a bad shape. ये कभी भी जा सकता है. That is why I'm taking a 360-degree view of Pakistan in detail, right? And I can tell you, at the end of this, you'll yourself realize where Pakistan is going. That's the whole aim. Once that happens, sometime later this month or early next month, I will do a full analysis of artillery and firepower and our ability to sustain a long war. That's more important. Yeah. What do you think of China's capacity to engage in cyber warfare and hold up? Yeah, they have capacity, but I think the cyber capacity to do mass damage is overblown. They have some capacity, they can do damage, but I don't know whether they can do the damage which people think they can do. Right? I'll leave it at that. Focus damage on specific installations, they have the capability. Is there a possibility of coup in China? I don't know. The conditions have not come to that. If the economic conditions go down and if there's some unrest, you might find Xi Jinping being kicked out. The communists themselves will kick them out. Whether there's an alternate system to communism which will come in China is a question mark. When would the Chinese mandate of heaven kick in? How are the floods and Wuhan pandemic not disasters? They are disasters. They're having problems. That's why I said one of the major reasons for decrease of the comprehensive national power of China is this. Right? They're already in a problem. See, 1 year back, 2 years back, you couldn't talk like this. People, okay. Then Veera Raghavan Sekar, FD Irkappa. Hi, sir, I missed your show, but my question is, when major power falls, it won't be quite China is not reached full power if it is declining. How hard will it be for us? Look, China is declining, there's no doubt.
in the theory of power and in the history of power, when two or three major powers fight, a third power rises. When the continental powers were fighting, uh, America rose, right? When Russia and USSR were fighting, China rose. Today, when China and USA are going to fight into Cold War, etc., etc., India is going to rise. That's the nature of power transfer. And I'm going to do a show on this. I'm going to do a show on India and its India's rise and geopolitics. Just give me some time. I've submitted an article. If it's accepted to a foreign magazine, then I'll do it because I have my own radical views on India's rise, and it's positive. India is going to be a superpower. That's as my calculation. Okay, Pinky, do you think controlling people like communists can decrease your nationalism for your country? Yes, not in India. India, you can't control people. If we start controlling people in India, we are in trouble. Okay, India is not a place where you can control people. Look, अगर हिंदी में बोलो तो इंडिया में हमें विभिन्नता से एकता ढूंढना चाहिए. अगर हम ज्यादा एकता के ओर विभिन्न हो जाएंगे. You need to seek unity through diversity. If you look at too much unity, you'll become diverse, and this business of nationalism and all will fail. You need inclusivity in race, religion, caste, creed, education, gender, economy, everything. We have to take the weakest. India will be as strong as the weakest link it has. That's my take. Right. Hope you're good. You amaze us with your analysis. Yeah, thank you. It's not an amazement. I just talk normal things which we often forget. There's a story I must tell you. I'll end this thing with a story. Canada is very, difficult. Canada finds life next to USA very difficult. So I asked a Canadian, why do you find being next to USA difficult? You are French, both Anglo-Saxon. You have free borders. You don't pose a threat to each other. No, nothing. He said, sir, as a Canadian, I must know that I'm sleeping next to a bear. It doesn't matter if the bear is aggressive or not, or if it is kind or not. But the moment you sit next to a bear and sleep next to a bear, it doesn't matter which side the bear turns. Even in sleep, it will crush you. India is a bear which doesn't know how it can crush others. Okay, India is I wouldn't say we had spoken of as an elephant. India is that elephant which doesn't know its own weight. Symbolically, everyone says India is an elephant. An elephant has strength. We need to realize the elephant needs to realize its own strength. Yeah, with this, I'll end today's thing with again a request. Kindly tell more people to join in. In any case, from day after onwards, we're going to start this new journey on Pakistan. Tomorrow, I'll not be on air because I have a official commitment with the armed forces here. Day after, we'll talk of Pakistan, and Sunday we'll talk of information operations. That's going to be interesting, right? Thank you. Good evening and Jai Hind.